सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन बहुत ही बिजी है। सुबह 15 को मैं उठ गई और अभी फटाफट से रेडी होके 10 मिनट में घर छोड़ना है। लेट्स स्टार्ट दिस डे ऑन अ गुड नोट। तो आज मैंने विंटर जैकेट डाल लिया है। आज मैंने कोई खेल नहीं किया क्योंकि मैंने बालकनी में सुबह निकल के देखा तो बहुत ही ज़्यादा ठंड, चिल्ड विंड चल रही थी अभी भी। कल और आज का शेड्यूल इतना टाइट चला है कि मुझे ना ढंग से सोने का भी टाइम नहीं मिला। इट वॉज अराउंड 12 व्हेन आई स्लेप्ट एंड आई सी अ बस गोइंग, दैट्स द हार्ट फीलिंग। उसके बाद सोई, नींद नहीं आई। आई स्लेप्ट अराउंड 3, woke up around 7. Every student's life, I guess so. सो ट्रेनिंग ख़त्म हो गई। काफ़ी सारा चीज़ें ऐसी थी जो शेयर करना हमें अलाउड नहीं था, इसलिए जितना मैं शेयर कर पाई उतना मैंने शेयर किया। और अब होने लगी है स्नो। अच्छा हुआ आई डिडंट इग्नोर द सिचुएशन इन द कोल्ड विंड बिकॉज इट वाज शोइंग इट्स गोना स्नो। तो बैंड बज जाती है। इसके बाद हम चलेंगे चर्च। बाकी का दिन कैसे गुजरता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हेलो Habibi, come to Canada. Don't come to Canada. No, come to Canada. No, don't come to Canada. We need jobs. No, Habibi, come to Canada. Get your hands and body frozen. Okay, bye. Anto, how do you feel? Very bad. Not so good. We are coming from church. That part I'm really feeling good. Of course, I gone to church, attended mass on Ash Wednesday. It's really good. But walking in the winter, yeah, that's the video. I feel sad and bad. Why sad and bad? Of course, going to the church is the only good part. This winter, yaar, why? I thought it was ending. And it's like, hey, I'm still here. Watch me out. This is why Toronto. Unpredictable weather. 9:54. We can catch it. You want to record everything now? Memories. Time. I'm so cool. Canada. Habibi, come to Canada. Still searching for the path. Finally, we reached we home. made it home. OMG. Hey, mera Canada. जल्दी जल्दी खत्म हो बस ये। बल्ले घर जाएंगे, फिर घर जाएंगे। तो कल घर पहुंचने के बाद बड़े ही टायर्ड हो गए थे, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। जैसे तैसे स्नो स्टॉर्म की हालत में पहुंच तो गए। आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। आज भी हालत कुछ ऐसी ही है। अभी यहाँ का एनवायरनमेंट, ये बस स्टैंड पे मैं खड़ी हूँ, इतनी ज़्यादा स्नो है। और अभी तो खैर ठीक है, ये सारी स्नो हटा देते हैं रास्ते पे से। अभी तो खैर ठीक है क्योंकि स्नो गिर नहीं रही है। तो कंटिन्यूस स्नो जब गिरती है और स्नो पाइल अप भी होती है तब मुश्किल हो जाती है। अभी तो चल रहा है काम और देखते हैं। अभी स्नोफॉल तो लाइंड अप ही है। होंगी आपसे जल्दी किसी और वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। शुक्रिया, अलविदा।